भारत माता के ताज का रत्न जम्मू कश्मीर अपनी खूबसूरत वादियों या समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बावजूद इन दिनों देश के लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा। आतंकी हमलों के खौफनाक दृश्यों और दिल दहला देने वाली आतंकी कहानियों से लोगों के मन में भय घर कर गया है। पहलगाम, उरी और पुलवामा जैसे हमले पूरे भारतवासियों को गहरे जख्म की तरह दर्द देते हैं। आतंकवाद के खिलाफ विदेशी पैसों और कुछ सिरफिरे कट्टरपंथी गुमराह युवाओं को छोड़ दें तो पूरा देश एकजुट है। पर सवाल उठता है कि कौन है ये आतंकी? पाकिस्तानी तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन उनके साथ वो कश्मीरी नवयुवक भी हैं जिन्हें सोशल मीडिया ने पढ़ने लिखने की दिनों में अपनी राह से भटकाकर रेडिकलाइजेशन की राह पर ढकेल दिया, कट्टर बना दिया है। हाँ, इन नौजवान लड़कों पर पाकिस्तान और सांप्रदायिक दल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके एक ऐसी सोच थोप रहे हैं जहां बताया जाता है कि पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं तो आप हीरो हैं, राइफल के साथ पोज कर आप फेसबुक पर डालेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड इंप्रेस हो गई, रोड पर चलते चलते आप माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे कश्मीर के वीर के तौर पर। जाहिर है कि ये सच नहीं, और वास्तव में विदेशी ताकतें इन्हें मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। उनके लिए ये लड़के सिर्फ एक और जिहादी आतंकी से ज्यादा कुछ नहीं है, पर पीछे रह जाता है उनका परिवार, उनकी बहन, उनके पिता, उनके बच्चे और इन सब से ऊपर दुख में डूबी हुई मां। इसी सोच से भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लों ने ऑपरेशन मां की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य उन युवकों को अपनी मां और बाकी परिवार की आवाज और उपस्थिति से समझाना है कि आतंक की इस जिंदगी का कोई सुखद अंत नहीं और इसे छोड़ वे अपने घर वापस आ जाएं। लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों का यह ऑपरेशन सिर्फ उनकी दिलेरी से प्रेरित नहीं था, बल्कि कश्मीर में सैन्य कमांडर के रूप में मिले अपने अनुभवों से भी। जैसा कि वे याद कर बताते हैं कि एनकाउंटर में मारे जाने वाले आतंकियों के पास अपनी मां के लिए लिखी चिट्ठी पाई जाती थी, और दोनों धर्मों हिंदू और इस्लाम में जिस दर्जे पर मां के प्रेम और सम्मान को रखा जाता है उसका इस्तेमाल करके जीवन की राह से भटके इन नौजवानों को होश में लाया जा सकता है। अगर एक सच्चा मुसलमान बंदूक उठाता है किसी के कहने पे, वो किसके कहने पे बंदूक छोड़ेगा? शायद अपनी माँ के कहने पे। इसी भावनात्मक किस्से पर आधारित डॉक्यूवेब द्वारा बनाई गई डॉक्यूमेंट्री ऑपरेशन मां 27 अगस्त को रिलीज की जा रही है। डॉक्यूमेंट्री के प्रेस स्क्रीनिंग के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लों बताते हैं, 90% film is shot in Kashmir at real locations with real people. All the footballer and the Maulvi, they are the real boys who came back. And the voice of the sister is a real sister who is the footballer sister. She is a debater and a wonderful girl. She can talk on any subject. And look where her brother was going. So other people also gave the commentary, all actual people, actual stories. Nothing made up other than the actors who came in to represent a person. And I became a part of this initiative, as was told in the movie also, that because of my own upbringing, and of course, when I saw the Kashmiri society, every society has a mother as a pillar in the family. It's true for every society all over the world, but this particular society in Kashmir, which I observed from very close by, being a young captain major, having sat in those houses, having enjoyed Wazwan with them, iftar parties and all. So I realized mother is a very central figure, and that's how the whole concept came. बॉलीवुड के अंदर दिखाए जाने वाले हमलों और मार धाड़ से दूर ऑपरेशन मां भारतीय सेना का एक जरूरी सिरा भी दिखाती है, और कैसे जान लेने के बजाय सैनिक जानों को बचाता है तथा देश की जनता के बीच की दरार को मिटाता है, यह भी दर्शाता है। इस मुद्दे पर ढिल्लों के साथ प्रीमियर पर आमंत्रित आर्मी ऑफिसर, कारगिल युद्ध के नायक लेफ्टिनेंट जनरल वाई.के. जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल डी.के. पांडे और मेजर जनरल राजू चौहान की ये टिप्पणियां थी। Operation Ma, Ma always touches that chord, and you get a lump in your throat, and the emotions are evoked by Ma.
dads can be unhappy about it, but that's how it is. And this movie we saw today, outstanding work. For the youth in Kashmir, it will send the right message that how the youth is being trapped, what are the problems they are facing, and how they're getting entrapped to get into doing wrong things. It will send the right message to the rest of the youth of the entire nation that how the Indian Army actually operates in counter-terrorist, counterinsurgency operations. That it is not just about numbers. It is not just about killing terrorists. There is also empathy. It is not just about getting results in terms of killing terrorists, but it is also in terms of getting the numbers of how many youth you prevented from getting radicalized and prevented from being from picking up the arm. So my compliments, Shani, actually for this beautiful operation that you conceptualized, that you thought, and the way it got implemented. And the number of youth, actually I have no data, but the amount of youth which sort of were prevented from being radicalized and prevented from picking up arms, commendable. Outstanding work, Tiny, and my compliments. But yes, I just want to cite very quick examples. While one way to look at it is that you take out a terrorist and you look at the mother as Operation Ma. 1999, I was a BM in 109 Brigade, Gurez, somewhere just start off Kargil operation. 23 kids were saved from exfiltration. We brought them back and wind up 23 children were saved. I was a corps commander in 2022, exactly 23 years later. We get those 23 families, they were all married. Now they were Ma and their kids, right? So we saw two generations, their mothers who were still alive and their kids for whom they had become mother and fathers. And those kids, the question when we are asking them, that kya banna hai? Doctor, engineer, army officer, police, stuff like that. Second part, 12 years to 25 years. Most of the people I see are parents. It's most difficult to manage a child. Even the mothers are unable to manage them. And that is the time every person who's ideologically oriented is hunting for these kids to be taken off onto the wrong path, into some sort of an ideological radicalization path. It may be drugs, it may be destruction, it may be devotion to something very, very wrong. And that is the time the mother is also unable to control. But a hand which comes like Operation Ma and a support from an outside environment, particularly from the uniformed community which gives an example to lead the right path, makes a huge difference. And I think that is where General Dhillon and his idea of Operation Ma, which came about to use this leverage to reach out to the heart of the terrorist or who's about to become a terrorist. I think it's some human service he's done, and that mission continued, right? We went on to launch a new thing called Sahi Rasta program, which was, I will not call it de-radicalization because that my wife doesn't like it to be used as a term. But then we picked up the boys who were about to become terrorists and shaped their mind through this program, and the program continued to run. Today is into a 30th edition, right, running in Kashmir, and large number of boys. The idea came nested from General Dhillon's idea. So my compliment to you, sir, and thank you for such a great effort. Good evening, ladies and gentlemen. While DP and Ojla, they both must have seen the professional side of Tiny, sir. Since we were co-located in DB camp, I got to see all sides of his personalities. And especially the emotional side of his personality, and that is what this whole initiative Operation Ma was all about. And I always say that 2019 was the defining year as far as the history of Kashmir is concerned. Pulwama happened, Balakot happened, 370 was abrogated, and here was the man who was at the helm of Chinarpur at that point of time. And I have no hesitation in saying, and I always say that to anybody, I think he was the right man at the right time at that point of time. I have been witness to this launch of this initiative, and thereafter success in terms of number of lives saved because of this initiative. And I will give all the credit to Tiny sir for all that. And what a beautiful documentary conceived by Tanuj, Sama and his team.
grateful that they are putting forward such a nice documentary in front of the nation. I would like to assure everyone here, people from the defense background definitely know this, that from the other backgrounds, every Fauji has a heart. And his heart is, from the outside he might look, okay, take my example, 6'3", this, that, and tough and solid voice. It's like a nariyal filled with ice cream. अंदर से मीठा भी है, मिल्क भी होता है. So, thank you everyone, thank you Aarti ma'am, thank you Namta ma'am, thank you everyone. अब जब कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है तो पाकिस्तान के कलेजे पे सांप लौट रहा है और उसके आतंकी हमलों के मंसूबे को कश्मीरी ही नाकाम कर रहे हैं और अपनी और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. भारत पाकिस्तान की शर्मनाक हरकतों से दूर अपनी नीति को कश्मीरी क्षेत्र में प्रभावी तरीके से लागू कर रहा है और कश्मीर का बचाव सिर्फ उसकी भूमि के लिए नहीं बल्कि कश्मीरियों के लिए भी कर रहा है, जैसा कि ऑपरेशन माँ जैसी कहानियां दिखाती हैं. इस डॉक्यूमेंट्री को देखने की जरूरत सिर्फ कश्मीरियों को नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को है, ताकि सेना को एक विनाशक की बजाय रक्षक के रूप में देखने की नई दृष्टि मिल सके. धन्यवाद. इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए.